Hello everyone, welcome back to our lecture series of Riemann integrations. In this lecture, we will discuss the integration of sum of two integrable function and then integration of some constant time of the function where function is given to be integrable. In the previous lectures, we have discussed the integrability of continuous and monotonic function. So let us start by writing the statement of this theorem 33.3 and then we will write the proof in a very simple and efficient way. So let us start the theorem. This is 33.3 theorem. It says let f and g be integrable functions on close interval a comma b and let this c, which is constant, okay, be a real number. Then we have these two part of this theorem. First c is that c time f, that means constant time of f, is integrable, एंड इन दैट केस जब इंटीग्रल है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे देंगे. द इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ सी टाइम एफ इज नथिंग बट द सी टाइम इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी of f. So this is how we are going to give the integration of a function which is multiplied by a constant. Okay, the second part of this theorem says if f and g are integrable, then there's some function which is f plus g is integrable, and in that case the integration from a to b of the addition of these two function f plus g is equal to a to b, a b of f plus integration from a to b of g. Okay, so basically these two statements are very simple and they required a very simple kind of treatment from the theory of Riemann integration. So let us write the proof of this. सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे that c time f is integrable. Okay, so to prove first one, okay, to prove c time f is integrable and the integration from a to b of c time f is equal to c time integration from a to b of f. Okay, so let f be an integrable function on a comma b. Okay, the moment this is integrable, then we are having that u of f is equal to L of f is equal to integration from a to b of f. So we are having this one. Okay, the moment we say f is integrable, इसका मतलब ये हमारे पास है. Now since c can be any number and let c is any real number. अब c पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकता है, c नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, तो हम और c ज़ीरो भी हो सकता है. c इक्वल टू ज़ीरो पर तो कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है. ओके, सो अब हम बात करते हैं जब c नेगेटिव है और c पॉजिटिव है, और एक स्पेशल केस जब c -1 है तब भी. ओके, सो वी कंसीडर various cases such as c is less than 0, c is equal to 0, c greater than 0, c is equal to -1, etc. ओके, तो हम इन केसेस के थ्रू देखेंगे कि ये स्टेटमेंट किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है. तो फर्स्ट अगर हम बात करें द फर्स्ट वन, c is equal to 0, then the result
is obvious. Okay, since c equal to 0 पर दोनों साइड ही हमें 0 मिलेगी, so this is what we need to write. Even ये एक trivial case है, but फिर भी हमें लिखना ही है. Now we are considering c is greater than 0. So इस केस के लिए we are considering a partition P. So let P that is equals to a equal to t naught less than t1 less than dot 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 less than tn equal to be a partition of the interval a comma b. Then what we can have, then we know that the supremum of this function, that is c time f, in the closed interval tk minus 1 to tk is same as c times supremum of f in the interval tk minus 1 tk, right? And if you think, then we can apply the summation as well. तो जब हम इस पर summation apply करेंगे k equal to 1 2 3 4, let me write k equal to 1 2 and so on n. Okay, so this will implies that summation, that is summation k running from 1 to n m time cf tk minus 1 tk, then just multiply by the length, so that is tk minus 1. This particular one is equal to summation k running from 1 to n, then c time this one. This is m f comma tk minus 1 tk time tk minus 1. ओके, तो अगर हर एक k के लिए ये सभी वैल्यूज इक्वल हैं, तो इनको जब हम सम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. ऑब्वियसली जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द अपर सम ऑफ द सी एफ फंक्शन. दिस इज द अपर सम ऑफ एफ फंक्शन टाइम सी. सो दिस implies that u, that is upper sum of cf associated with the partition P, is equal to c time u upper sum of P. This is the upper sum of function P, function f with respect to the partition P. So this is what we are having, and which is very important one. Okay, now if you think that if we are having the upper sum and we want to identify the upper integral, तो हमें इन सभी का infimum ही लेना है. So let us have this one. Let me write, this is number 1. Okay, so what about u of cf? Okay, this is nothing but the infimum of this set ucf time p, where p is a partition of a comma b, right? Now since ucf is nothing but the c time, which is equal to infimum of this function, that is c time u of fp, such that p is a partition of a comma b, right? Now since this c is irrespective from the choice of p, that is ये c और p दोनों ही इंडिपेंडेंट है, तो हम p की कुछ भी चॉइस लेंगे, c पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है. सो वी कैन राइट दिस इज c टाइम infimum of u f p, such that p is a partition of a comma b, right? Now from the definition, this is nothing but the upper integral of this function u f, right? So u of cf is equal to c time u of f. Now we know what is u of f, that is nothing but the integral of this function, right?
let me write that this is number 2. Okay, and let me write this is number 1. Okay, so from 1 we can have the upper and lower integral, and similarly agar let me write this is number 3. Similarly we are having that lower sum of c time f with respect to p is equal to c time lower sum of f with respect to p. Okay, this is important one. Let me call this is number 4, and this will implies that the lower integral of cf is equal to c time lower integral of f. Now this lf and cf ये हमने equal show करना है, right? So now ये फंक्शन पहले इंटीग्रेबल है ये शो करना है, तो हम क्या कहेंगे नाउ वट अबाउट द एल ऑफ सी एफ, दिस इज इक्वल टू सी टाइम एल ऑफ एफ, क्योंकि फंक्शन एफ इंटीग्रेबल है तो एल ऑफ एफ किसकी इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू सी ऑफ यू ऑफ एफ. ये क्यों कह पा रहे हैं, सिंस एफ इज इंटीग्रेबल एंड फ्रॉम 1. Okay, and c time u of f ये किसकी इक्वल है, this is nothing but u of cf, and this is obviously from number 3. This is from 3, right? So this ucf is equal to lcf is equal to ucf. Okay, so which implies that cf is integrable, and what is the value of ulcf, that is, and the integration from a to b of cf अगर इंटीग्रेबल है तो यही हमारा LCF बनेगा और यही हमारा UCF बनेगा, और that is nothing but c time you can write L of f. Now L of f is nothing but the integration from a to b of f. This is again from 1. Okay, so integration from a to b of c time f is nothing but c time integration from a to b of f. So this is important one. Okay, and this is true when c is positive, right? Now we are going to deal when c is equal to -1, and this is quite interesting. Now consider the third case when c is equal to -1. Now the moment c is equal to -1, तो इन सभी अपर सम और लोअर सम में क्या डिफरेंस आएगा, लेट मी आइडेंटिफाई दैट. जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कोई एक फंक्शन है. ओके, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, एंड द फंक्शन इज लाइक दिस वन. सपोज दिस इज आवर फंक्शन, सपोज दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b. जब हम इस फंक्शन को -1 से अप्लाई करेंगे, दिस इज आवर फंक्शन, लेट मी राइट दिस इज आवर फंक्शन f. नाउ व्हाट अबाउट -1 टाइम f. अगर इस फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो हमने क्या करना है, लेट मी राइट अगेन वी आर हैविंग सपोज दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस. सपोज दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b. नाउ सी, जब हम इन सारी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जो ज़ीरो है वो ज़ीरो पर ही रहेगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो ज़ीरो है वो ज़ीरो, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव. इसका मतलब हम इस एक्स एक्सिस के अलोंग हम इसका एक रोटेशन कर रहे हैं. सो वी आर हैविंग लाइक दिस. ओके, दिस इज सिमिलर टू, ओके, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि हाँ ऐसा ही बनना चाहिए. Let me rewrite. So this is the mirror image of this. Now if this function is integrable, then obviously this function must be integrable. और ये हम कैसे शो कर रहे हैं कि जब हमने इस फंक्शन f को -f से -1 से मल्टीप्लाई किया तब हमें ये वैल्यूज मिली. Now what about this supremum and infimum for this function? See, this is the infimum of this function. Now that infimum becomes the supremum, right?
and suppose that point represent the supremum earlier. When we multiply it by -1, now this point becomes the infimum. इसका मतलब अगर फंक्शन f का जो भी पॉइंट इन्फिमम है उसको -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो सुप्रीमम बन रहा है, और जिन पॉइंट्स पर हमें सुप्रीमम मिल रहा था अर्लियर फॉर द फंक्शन f, जब हम f को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वहाँ से हमें इन्फिमम मिलेगा। तो इसका सेंस ये हुआ कि इन्फिमम और सुप्रीमम of these f and -f are related by the negative sign. Okay, so ये किस तरीके से, let me write, I hope you understood through this diagram. So for this we can see that the supremum, okay, I'm writing the supremum, that the supremum of f in the interval tk minus 1 to tk is, अगर मैं इसका नेगेटिव लेता हूँ, ओके, इफ आई एम टेकिंग द नेगेटिव ऑफ दिस, द सुप्रीमम ऑफ दिस फंक्शन, जैसे यहाँ पर सुप्रीमम था, मैं यही इंटरवल हम लोग सपोज कर सकते हैं, तो इसका सुप्रीमम इस पॉइंट पर है और वो अब इसी पर्टिकुलर इंटरवल में इन्फिमम बन रहा है, तो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू दी infimum of, this is infimum of the minus function in the same interval tk minus 1 to tk, right? We are having this particular observation. Okay, now what about this one? अगर ऐसा है, this is true for k equal to 1, 2 and so on. फॉर ईच सब इंटरवल यू कैन कंसीडर कि जिस किसी भी इंटरवल में अगर हम बात करेंगे तो किसी भी, जैसे मान लेते हैं इस वाले सब इंटरवल की बात करें, यहाँ पर इन्फिमम में यहाँ मिल रहा है, सुप्रीमम यहाँ मिल रहा है, जबकि इसी इंटरवल में हमें इन्फिमम फिर इस पॉइंट पे मिल रहा है और सुप्रीमम इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। तो सुप्रीमम और इन्फिमम इंटरचेंज हो रहे हैं फॉर दिस फंक्शन एफ एंड माइनस एफ, राइट। अब इन दोनों के लिए जब हम कह रहे हैं कि हर एक के के लिए ही ट्रू है, तो के इक्वल टू 1, 2, 3 सभी के लिए ट्रू होगा, और जब हम उनको सम करेंगे तो हमें सेम ही रिजल्ट मिलेगा। जब हम इनको सम कर रहे हैं, सो दिस विल इम्प्लाइज दैट नेगेटिव ऑफ summation of k running from 1 to n, the supremum of this function f in the interval tk minus 1 to tk will be equal to summation k running from 1 to n of infimum of this minus function in tk minus 1 to tk and like this, right? अब अगर हम कह रहे हैं ये समेशन इक्वल है तो हम इन्हें इन्हीं इंटरवल की लेंथ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम के रनिंग फ्रॉम 1 to n सुप्रीमम ऑफ f in the interval tk minus 1 tk multiply it by tk minus 1, okay, which is equal to summation k running from 1 to m, this is not m, n, the infimum of this function minus f in the interval tk minus 1 to tk, multiply it by tk minus 1, right? By the definition this is nothing but the upper sum, so this will implies that this is negative of upper sum of this function f for the partition p, and this is equal to, this is the infimum of this function, so we can say this is the lower sum of this function f and in the partition p. So this is very important one, let me call this is equation number 5, 6, okay, we are calling this is equation number 6. Now see, this similar idea can be adopted for the lower sum on the left hand side, so also in a similar way we can say, similarly the negative of lower sum of f in p is same as the upper sum of minus f p, okay। और जब हम इनकी बात करेंगे, क्योंकि हमें तो इन्फिमम और सुप्रीमम की बात करनी है, सो लेट अस आइडेंटिफाई दैट।
These are very important observation.